So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you all are aware that every Tuesday at 7 p.m. I discuss static GK and every Wednesday I discuss the current affairs. Okay? So in today's class, I am going to discuss the fifth week current affairs for the month of October. So am I audible, visible? Is everything fine? Going to discuss the fifth week current affairs for. Okay. So let us discuss today's class है ना. Let us. Okay, अगर आपको previous videos देखने हैं, if you are interested to watch the previous videos, first of all please subscribe to the channel, go to the playlist और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली वीडियो सब्सक्राइब है ना, इसमें नीचे जाना व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट ऑल दोस प्रीवियस वीडियोस. ओके, so that would be helpful for you. Okay, so since January onwards we have provided like since I think June onwards we have provided it, तो उतना काफी है. जून से अगर आप देख लोगे है ना, so that is more than enough. So let us begin with the questions. और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि I will keep on asking questions and you have to answer it in the live chat. तो आपको आंसर करते जाना लाइव चैट में, मैं सवाल पूछते जाऊंगा. If you know the answer, please answer me. I'll be very happy to know. Which of the following recently became the 11th member of ASEAN? So the 11th member of ASEAN is Timor-Leste or East Timor. Okay. So earlier we had 10 members. East Timor has recently become the member of ASEAN. What is ASEAN? So basically this is India. We are actually in South Asia region, right? हम लोग South Asia में. And this region, Myanmar से लेके this one, this is called as Southeast Asia. ठीक है? So we write it as SEA, Southeast Asia. Now, ASEAN is Association for Southeast Asian Nation. ठीक है, so Southeast countries, East Asia countries ने अपना एक association बनाया है 10 countries. That's called as Association for Southeast Asian Nation. Another 11th country got added recently. यहाँ पे कहीं पे East Timor नाम है उसका, या फ्रेंच में कहते हैं तिमोर लेस्ते. Okay, that is what you should be knowing. Now the capital of this or the headquarter of ASEAN is actually in Jakarta, which is currently the capital of Indonesia. ठीक है. Okay, the next one is Catherine Connolly has become the president of which country or has been recently elected as the president. कौन से मुल्क के president बने, ये आपको बताना है. If you know the answer, please answer me. I'll be very happy to know. If anyone is watching, if you know the answer, please answer it. Option A is the right answer. Ireland is the right answer, है ना? है ना? So A is the right answer to this question. और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? Dublin. Now the next one is, what are the names of the two fast patrol vessels launched by the Indian Coast Guard? Recently, the right answer is Ajit and Aprajit. B is the right answer to this question. Take ICG, Indian Coast Guard launched fast patrol vehicle ICGS Ajit and ICGS Aprajit at Goa Shipyard Limited. ठीक है, आदामिया क्लास पेट्रोल वेसल्स हैं जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है. तो इसका अजीत और अपराजीत को भी लॉन्च किया गया, आप देख सकते हो. That is what you should be knowing about. So B is the right answer. Let's move on to the next one. A bust of Rabindranath Tagore. ये bust कहते हैं, मतलब मूर्ति होती है, स्टैचू है ना. Was recently unveiled at which Indian diplomatic mission? इंडिया के फॉरेन ऑफिस में जो एम्बेसी होती है, कौन से कंट्री के इंडियन एम्बेसी में ये ओपन किया गया? The right answer is Beijing. China is the right answer to this question. A is the right answer. Okay.
That is what you should know. The bust sculptured by Chinese artist Yuan Zikun was unveiled at Indian Embassy in Beijing. So A is the right answer to this question. That is what you should be knowing. The next is what is Bharat Taxi recently in news? क्या है बताइए, भारत टैक्सी क्या होता है? सो जैसे टैक्सी सर्विस है ना, राइट आंसर इज डी. सो कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस जैसे ओला उबर होता है ना, उसी टाइप का. ठीक है, फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस राइवल ओला उबर एटसेट्रा, एंड दिस विल बी एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. The next is ISRO's upcoming satellite CMS-03 GSAT-7R will serve which purpose? और ये इस रॉकेट से भेजा गया, रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3, है ना. Now it is called as LVM-3 Launch Vehicle Mark 3. इसी को लोकल लैंग्वेज में बाहुबली कहा जा रहा है ना. आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में काफी था बाहुबली. BA होगा ना, हाँ BLI. सो GSLV का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं. GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और एक PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना. सो GSLV Mark 3 जो है ना, सबसे मोस्ट पावरफुल इंडिया का रॉकेट इंडिया के पास जो है, या लॉन्च व्हीकल इसको के लिए. सो इसी का दूसरा नाम है LVM-3, हर जगह लिखा था लॉन्च व्हीकल Mark 3. सो दे लॉन्च अ सैटेलाइट. सैटेलाइट इसके अंदर होता है, ऊपर टॉप में सिर्फ रखा होता है ना, यहाँ पे हिस्से में GSAT-7R. और CMS तो मिलिट्री पर्पस के लिए. इट विल हेल्प स्ट्रेंथन इंडियन नेवी सर्वाइलेंस इन इंडियन ओशन रीजन. सो इज द राइट आंसर, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, टू एनहांस सिक्योर डिफेंस कम्युनिकेशन ऑन बोर्ड इंडियन रॉकेट. ठीक है. स्पेसक्राफ्ट विल ट्रैवल ऑन बोर्ड LVM-3, वही GSLV Mark 3 को कहते हैं, M5 rocket, है ना. Dubbed as Bahubali for its heavy lift capability. The next is United Nations Day is observed every year on 21st October, 22nd October, 24th October, 25th October. What is the right answer? UN Day कब मनाते हैं? United Nations was established on officially 24th October 1945. So this year we completed 80 years. है ना. So 24th October 2025. So C is the right answer to this question. UN Day commemorates coming into force of UN Charter on 24th October 1945. C is the right answer. The next is which of the following Indian states has become the first to introduce right to disconnect bill 2025? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल केरला हैज इशूड. डिस्कनेक्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी का वर्किंग आवर है ऑफिस में 10 to 6 या 10 to 5. ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं. सो 5 के बाद मान लीजिए ऑफिस से बाहर निकल गया. नाउ द मैनेजर कैन नॉट कॉल हिम और हर. ठीक है, दैट्स द आइडिया. सो 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक आप काम कराइए, या 6 बजे जो भी. उसके बाद जो आदमी ऑफिस से बाहर जाए तो फिर उसको मैनेजर या ऑफिस वाले उनको कॉल करके परेशान नहीं करें. यानी अब आप डिस्कनेक्ट हो गए ऑफिस से, ओनली इन ऑफिस आवर आई विल बी वर्किंग. दैट्स द आइडिया ऑफ राइट टू डिस्कनेक्ट. सो बी इज द राइट आंसर, केरला. फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज दिस बिल. The next is who has been recommended as the 53rd Chief Justice of India. Recently appointed, I think yesterday or day before yesterday. Huh? So the outgoing Chief Justice of India was Justice B.R. Gavai. And now we are having a new Chief Justice of India, Justice Suryakant. He will remain CJI till February 2027. So A is the right answer to this question. Okay, that is what you should be knowing. So 24th November ko he took the charge, Justice Suryakant. The next is which of the following railway station has been renamed as Chhatrapati Sambhaji Nagar?
The right answer is option C. Aurangabad is the right answer to this question. Has been renamed as Chhatrapati Sambhaji Railway Nagar with the new code CPSN. Okay, so C is the right answer to this question. The next is the Global Peace Prayer Festival is being hosted by which country? Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Japan. Modi ji also visited there. If you know the answer, please tell me. अगर आपको आता है तो आप बताइए आंसर. The right answer is option B. Bhutan is the right answer. Global Peace Prayer Festival from 4th to 19th November 2025. Prime Minister receives audience with 4th King of Bhutan and participates in Global Peace Prayer Festival. ठीक है. Okay, that is what you should know. भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू. ओके, इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली कहां हुई थी अभी? वेयर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड? At which venue? The right answer is option B, Bharat Mandapam, New Delhi. B is the right answer to this question. With participation from 124 countries. ठीक है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? So the answer would be गुरुग्राम. ठीक है. That is what you should be knowing. So B is the right answer here. The next one is, which of the following Indian states has the largest mangrove cover? Largest mangrove cover is D is the right answer. West Bengal is the right answer to this question. 42% of India's total mangrove forest. Mangrove forest. Okay. Okay. Largest mangrove forest. यहाँ पे सुंदरबन एक्चुअली आई एम श्योर यू मस्ट बी अवर. यहाँ पे से गंगा रिवर जाती है. This is Brahmaputra river. And this region is Sundarban. 42% of India's total mangrove area. D is the right answer to this question. The Election Commission's SIR 2.0 refers to what? SIR was conducted in Bihar recently before the election. Then SIR 2.0 is being conducted in 9 states and 3 union territories. So, what is the full form of SIR? A special intensive revision of voter list or electoral roll. So, B is the right answer to this question. This is voter list, or what we call it as electoral roll. ठीक है. 12 states and union territory. है ना? So basically it is 9 states and 3 union territories. So they have written like this, but actually it is this. Right now it is being conducted, the second phase. The first one was in Bihar, it was conducted. So electoral roll revision means the deletion of the old, like those who have died or something like that, and the addition of new voters. That is what you should know. The next is, who among the following set a world record and won a gold medal at Asian Youth Games in Bahrain? So the right answer is प्रीतिश्मिता भोई. So D is the right answer. आप देख सकते हो, है ना. इंडिया ने बहरैन में 13 गोल्ड मेडल जीते हैं ना. उसमें से एक वेट लिफ्टिंग में प्रीतिश्मिता भोई ने जीता गोल्ड 44 kg कैटेगरी में. सो बाकी बॉक्सिंग में बहुत सारे लोगों ने जीता है, बीच रेसलिंग में. ठीक है. राइट आंसर इज डी. Who was re-elected as the president of Cameroon at the age of 92?
The right answer is option A. Paul Biya is the right answer to this question. President of Cameroon having ruled since 1982. ठीक है, तो कैमरून कहाँ पे है? तो अफ्रीका में ये वाला, दिस इज कैमरून। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ये तो पता होगा आपको। यहाँ पे कैमरून है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। ओके, लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू रिसीव इंडियाज फर्स्ट शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी? अब देख लो, ये दोनों शिप्स अटैच है और एलएनजी एक शिप से दूसरे शिप इट कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ फ्यूल, है ना, सो which can be transferred from one ship to another ship. So this facility is started where? The right answer is option C, Kerala. Vizianjam port है ना? India's first ship-to-ship LNG bunkering facility come up at Vizianjam port in Kerala. And this port is in Kerala. And transferring of LNG from a dedicated supply vessel. और एक ship से दूसरे ship पे, है ना, moving from one ship to another. That's the idea. LNG. So where is Vizianjam? So the last step में एकदम Vizianjam. हाँ, I think H करके है स्पेलिंग, एक बार स्पेलिंग ये वाली आप देख लीजिएगा, this is the spelling. खैर, so that is what you should be knowing. And the last step of Kerala. This is Kerala. The next is who has been recently appointed as the chairperson of 8th Central Pay Commission. This is important, है ना? To revise the salary of central government employees, this commission has been set up. This commission will recommend the increase in the salaries of the central government employees. Right answer. What is the right answer? Former Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai. D is the right answer to this question. है ना? So chairperson. The next is which of the following countries recently awarded Donald Trump its highest civilian decoration, the Grand Order of Mugungwa. So कौन से कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया अभी रिसेंटली? Which country? Anyone? The right answer is option B. South Korea is the right answer to this question. Grand Order of Mugungwa. This is South Korea. This is Seoul. With a replica of gold crown. है ना? So B is the right answer. ठीक है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, है ना? और ये दोनों डिवाइडेड है किसे? 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 38 पैरेलल से. So B is the right answer to this question. The next is the Neom Sky Stadium is being built in where? और ये हाइट पर बनाया जा रहा है. आप देख रहे हो स्टेडियम जो है जमीन से हाइट पर है. This is at I think 1500 meter or something height. Neom Sky Stadium it is being called. Where it is being built? So the right answer is option C, Saudi Arab. So C is the right answer. And it is at the height of 1150 feet above the ground. 1150 feet above the ground. ठीक है, आप देख रहे हो जमीन से ऊपर भी बनाएंगे. पता नहीं, I don't know what is the meaning of, like, what is the benefit of that. But yes, just याद रखिएगा fact. And most likely 2034 FIFA World Cup will be organized. So it will be one of the venue of that. है ना, 350 मीटर या 1150 फीट ऊपर होगा जमीन से. The next one is which of the following organization recently adopted Motion 007 on soil security law? The right answer is option C, IUCN. So International Union of Conservation of Nature and Natural Resource, है ना, इन लोगों ने मॉडल लाए. Motion 007 और soil protection से रिलेटेड कुछ है. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क है. IUCN का काम क्या है? नेचर नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, ये बताना चाहिए. नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज प्लान टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स? जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन करने का कौन सी कंट्रीज प्लान कर रही है?
The right answer is option A. Denmark is the right answer to this question. Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen. Okay, let's talk about it. कोई 15 साल से कम के बच्चे तो उनको सोशल मीडिया पर बैन मतलब नहीं देख सकते ना, एक्सेस टू सोशल मीडिया. ओके, सो ये उनका रूल बन रहा है. नेक्स्ट है, हाँ आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया है. दिस इज डेनमार्क. डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन. है ये, ठीक है. The next one is the 20th East Asia Summit recently adopted which declaration? इसमें आसियान कंट्रीज होते हैं, 10 आसियान कंट्रीज होती हैं और प्लस 8 और कंट्रीज होती है. 18 कंट्रीज मिला के ईस्ट एशिया समिट होता है. कौन सा डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्ट किया लोगों ने? So where it happened? So it happened in Kuala Lumpur, the capital of Malaysia. मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ. C is the right answer to this question. Reforming peace and stability. So this is Malaysia, है ना, और यहाँ पे कुआलालंपुर मिलेगा. So C is the right answer, है ना. Okay, कुआलालंपुर मलेशिया ईस्ट एशिया समिट. 10 आसियान कंट्रीज प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स, 18 कंट्रीज टोटल. तो उसमें इंडिया भी आप देखोगे, है ना, 8 डायलॉग पार्टनर्स में. सो आसियान कंट्रीज प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स. द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वन 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज? किसने जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुनील अमृत. बुक का नाम बर्निंग अर्थ और एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 years. ठीक है, ओके. सो सी इज द राइट आंसर, प्लीज रिमेंबर इट. कभी पूछ लेते हैं सब सवाल. रशिया रिसेंटली टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन नेम्ड व्हाट? न्यूक्लियर पावर्ड यानी न्यूक्लियर एनर्जी से वो चलता है, वर्क करेगा. What is the name? The right answer is option C. Poseidon is the right answer to this question. Nuclear powered, nuclear capable underwater drone. है ना, ठीक है. The next is who among the following inaugurated Grand Unity Parade 2025? Actually 31st October 1875 Sardar Patel was born. So this year we are celebrating 150 years. उनके 150वां बर्थडे, ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को. सो और उनको उनके नाम पर यूनिटी लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज देयर, है ना, और आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. ही वाज रिस्पांसिबल फॉर यूनाइटिंग द कंट्री, है ना, आपने सुना होगा, जानते होगे, है ना, ठीक है. सो द राइट आंसर इज मोदी जी इनॉग्रेटेड दिस, है ना. सो इनका बर्थडे 31 अक्टूबर 1875 को. ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, स्टारलिंक हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट ऑफिस वेयर? Starlink, I'm sure Elon Musk की कंपनी है, which provides actually communication satellites, ठीक है, sorry, communication, which provides internet based or satellite based internet services, है ना. So they have started in Mumbai. So is the right answer. Okay, that is what you should be knowing. Next is which of the following company becomes world's first to reach US dollar? ये इसका मतलब ये हुआ 5 trillion market valuation. Market valuation means total value of shares. 5 ट्रिलियन डॉलर. इट्स नॉट बिलियन, इट्स ट्रिलियन. 5 ट्रिलियन डॉलर का एम कैप भी लिखते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना. किसने अचीव किया? नवीडिया कहते हैं. ए इज द राइट आंसर, है ना. एआई के बाद इनका काफी बूम हुआ है ना. 5 ट्रिलियन डॉलर का इनका मार्केट वैल्यूएशन है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, बाकी अब देखोगे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों का 4 ट्रिलियन डॉलर अचीव होता है इस साल. इवन दिस ईयर इंडिया ने भी 4 ट्रिलियन डॉलर अचीव होता है, 5 ट्रिलियन पे चलेंगे. सो ए इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है द न्यूली साइंड 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस वाज रिसेंटली इंक्ड इन। 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और यूएस के बीच। कहां साइन किया गया एग्रीमेंट बताइए। The right answer is Kuala Lumpur, Malaysia. C is the right answer to this question. Okay. है ना। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूएस काउंटर पार्ट पीटर हिग्स साइडेड। कुआलालंपुर में क्यों, वही जो वहां पर आसियान की ईस्ट एशिया समिट हो रही है और अभी ADMM प्लस आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है सब, ठीक है, सो इसीलिए साइन किया गया वहां। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मोटरवे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रांस, है ना। चार्ज एज यू ड्राइव, रोड दैट वायरलेसली चार्ज ईवी ऑन द गो। मतलब ऐसा कुछ है कि रोड पे आप चलिएगा तो चार्ज होते जाएगा। So when you drive on the road, your car gets charged, even moving car. ठीक है, कुछ क्या उन लोगों ने बनाया होगा, I don't know how. So D is the right answer. नेक्स्ट है जस्टिस सूर्यकांत को भी रिसेंटली CGI बनाया गया। विच नंबर CGI has been appointed? ये तो थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था in the beginning of the class. So he has been appointed as the 53rd Chief Justice of India. C is the right answer. नेक्स्ट है हु डेवलप्ड लूना, वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनल वॉइस टू वॉइस AI। ये एक AI मॉडल है, ठीक है, स्पर्श अग्रवाल साहब ने डेवलप किया है, ठीक है, IIT BHU की ग्रेजुएट है, बेस्ड इन जयपुर, ठीक है। दैट कैन सिंग, विस्पर एंड फील, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट भी दिया गया है, ठीक है, AI को। तो कहा जाता है कि AI में इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होगा, है ना, मशीन है तो, लेकिन ही इज ट्राइंग his best to come up with this. Next, who among the following recently inaugurated Sohra Tourism Circuit project under PM Divine? सोहरा जो है ना वो चेरापूंजी रीजन, वही चेरापूंजी मेघालय वाले रीजन को कहते हैं, मेघालय में। और PM डिवाइन स्कीम कौन सा है ना, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो इसके लिए एक सेपरेट स्कीम बनाया गया ना, और सेपरेट मिनिस्ट्री भी है, डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री इज देयर, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। रेन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, आपको पता है, चेरापूंजी मौसम नाम में बहुत बारिश होती है। चेरापूंजी इज फेमस फॉर रेनफॉल, है ना। और अब जो है मौसम नाम में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। ओके, सो वही सोहरा वही चेरापूंजी को कहते हैं। लेट्स मूव ऑन, है ना। तो यहाँ पे मेघालय, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, द कैपिटल ऑफ मेघालय शिलोंग। Where will India host international fleet review exercise Milan and IONS conclave of chief in 2026? The right answer is विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। So A is the right answer, ठीक है। इंडिया टू होस्ट दिस, है ना, मिलान 2026। ये सब नेवल एक्सरसाइज होता है और नेवल मीटिंग वगैरह होती है इसमें, नेवी के ऑफिसर्स की, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू शुड नो, है ना। सो ये आंध्र प्रदेश है, दिस इज विशाखापट्टनम यहाँ पे। Next is NTPC began drilling India's first carbon dioxide storage well at which location? The right answer is option B, पाखरी बरवाड़ी, झारखंड, ठीक है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज वेल एट पाखरी बरवाड़ी, है ना। नेक्स्ट इज शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम was recently inaugurated in which state by मोदी जी, है ना। रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, छत्तीसगढ़ में नया कैपिटल बना है ना, अटल नगर, नवा रायपुर या अटल नगर कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नया रायपुर, हाँ, नवा रायपुर लिख दिया, नया रायपुर, वही अटल नगर को कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बना है। न्यू सिटी इज बीइंग मेड इन छत्तीसगढ़ एज द कैपिटल,
है ना. So ये छत्तीसगढ़ है ना. The next one is China's 42nd Antarctic expedition aims to conduct first ever drilling in where? The right answer is D is the right answer. Subglacial lakes. ठीक है. Subglacial lakes मतलब एक अंटार्कटिका जो है ना उसके अंदर जो है ना लेयर में ग्लेशियर लेक्स होंगे, जो ग्लेशियर के फॉर्म में होगा लेक होगा. So subglacial inside it, inside the top layer. So D is the right answer to this question. Who is China's youngest astronaut to go to space at Shenzhou 2021? इस रॉकेट से स्पेस पे गए चाइना के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट है एंड ही हैज गॉन टू तियांगोंग स्पेस स्टेशन. चाइना का स्पेस स्टेशन बन रहा है ना, दे पार्शियली मेड इट आल्सो, है ना. सो द राइट आंसर इज वूफी. बी इज द राइट आंसर. हेवनली पैलेस किसको कहते हैं भाई? तियांगोंग को. तियांगोंग मींस हेवनली पैलेस इन देयर लैंग्वेज. ओके. ठीक है. सो इट मींस हेवनली पैलेस इन देयर लैंग्वेज. So this is the space station. So ये चार उनको भेजना था. So 3 they have already said. This is the last one they will be sending to make the entire Tiangong space station. Okay. So India is also planning to come up with its own space station in future. So we are stopping this class here. Now I'll be meeting you next Tuesday at 7 p.m. with static GK. So thank you everyone. Please subscribe to the channel.